Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 4 of conditional sentences, and today we are going to learn the second conditional sentences. So first of all, we try to know that how to use the second conditional. So as we know that second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely happen in the future. इट मीन्स के हमारे पास सेकंड कंडीशन में जो आउटकम या रिज़ल्ट होगा वो कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक होगा. मीन्स कि वो इट इज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी. अनरियल रिज़ल्ट होगा. वी जस्ट कैन इमेजिन इट एंड इट विल नॉट लाइकली हैपन इन फ्यूचर. और पॉसिबल नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा मुमकिन हो जाए. जब ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ हों तो उसको हम सेकंड कंडीशन में डील करते हैं. So we consider some examples. First example is, if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. If I inherited $1 billion, I would travel to the moon. तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने if clause में second form of verb inherited use की है. अगर मुझे $1 billion मिल जाते तो फिर मैं क्या करता? आई वुड ट्रेवल टू द मून. तो मैं फिर चांद की तरफ सफ़र करता. सो दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस. आई वुड ट्रेवल टू द मून. सो दिस इज़ अनरियल कॉन्सिक्वेंस. दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट you get money and you started to travel to the moon. If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. If I owned a zoo, so this is if clause. अब मेन क्लास में देखिए, आई माइट लेट पीपल. माइट इज़ द मॉडल वर्ब और आगे लेट हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है. आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द पीपल. अगर मेरे पास एक ज़ू होता, मैं एक ज़ू का मालिक होता, तो फिर मैं क्या करता? मैं लोगों को एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करने की, उनके साथ मिलने की, उनके साथ मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करने की इजाज़त दे देता. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इज़ अनरियल कॉन्सिक्वेंस. सो दीज टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आर डेल्ट इन द सेकंड कंडीशन. So the last example is, if I were the president of America, I would live on Mars. So the consequence is I would live on Mars. This is unreal situation कि मैं मार्स पे रहना शुरू कर दूंगा. अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो मैं मार्स में रहता, तो वहीं पे लाइफ स्पेंड करता. सो दिस इज़ अनरियल सिचुएशन which is used in the second conditional sentences. So we have to note some points. That notice the correct way to structure second conditional sentences is to use a simple past tense in the if clause. If clause में हमने simple past tense use करना है, and auxiliary modal verb that is could, should, would or might, आप ये modal verb use करेंगे अपनी इस if clause में. In the main clause, और in the main clause में आप modal verb use करेंगे, the one that expresses the unrealistic or unlikely outcome. जब सिचुएशन ऐसी हो कि आपका जो आउटकम है वो अनरियलिस्टिक हो या अनलाइकली हो. The following sentences illustrate a couple of the common mistakes people make when using the second conditional. Like बाज़ औक़ात हम ऐसे लिखते हैं, if I inherit $1 billion. So inherit is the first form. This is the simple present for tense. So हमने एक बात पढ़ा है कि जो second condition है वहाँ पे simple past tense use किया जाता है second form of verb. If I inherit $1 billion, I would travel to the moon. So this is wrong. The correct form of this sentence is, if I inherited $1 billion, I would travel to the moon. So हमने if clause में पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, मीन के सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जो मेन क्लास है वहाँ पे आपने मॉडल वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है. When applying the second conditional, use the simple past tense in the if clause. And like this is the example, if I owned a zoo, this is the simple past tense. I will let people interact with the animals. So there is something wrong in the main clause. I will let, this is not correct, this is wrong. You have to write I might let people. This is correct. If I owned a zoo, I might let people interact with the animals more. So I will let आपने यूज़ नहीं करना,
ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। हमने मॉडल वर्ब यूज़ करना है सब्जेक्ट के साथ। आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। Use a modal auxiliary verb in the main clause when using the second conditional mood to express the unlikelihood that the result will actually happen. So आपने modal auxiliary verb या could, should और would आपने यूज़ करने हैं main clause के अंदर। second condition में जब आपको पता हो कि जो result है that is unlikely, ठीक है, जब रिजल्ट इम्पॉसिबल होगा, अनरियलिस्टिक रिजल्ट होगा, तो वहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे सेकंड कंडीशन के मेन क्लास के अंदर। This is the end of lecture 4. I would request you to like this video, share with your friends and colleagues, and subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.